Question number 10. So let's just let me just sort for you guys once and for all 3 main topics from this chapter. Apart from the others, obviously, we look at convergent and divergent evolution. This is topic number 1. देखते हैं 2. Adaptive radiation. बहुत MCQs इस पे आते हैं, important है, तो पसंद है. And the third you get a lot of MCQs on is origin of man, origin and evolution. न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल, बहुत कॉमन आता है. एंड वो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अगर आप देखेंगे और अडैप्टिव रेडिएशन देखेंगे तो इसके एग्जांपल जब आप कंसीडर करेंगे तो उसमें से ही हार्डी वाइनबर्ग पे वो लोग बेस करते हैं. तो कीप दीज 4 टॉपिक्स इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एमसीक्यूज ऑन टू द forelimbs of a cat, lizard used in walking. Forelimbs of a whale are used in swimming. So forelimbs of a whale are what? Flippers. And forelimbs of bats are used in flying. So forelimbs of whales are flippers. Forelimbs of bats will be देखा, विंग्स ऑफ बर्ड्स में देखा तो बैट का भी विंग्स है, बट दे आर फोरलिम्स. तो फोरलिम का मॉडिफिकेशन है. तो इसमें व्हाट डू वी सी? द मोस्ट कॉमन थिंग हमने क्या देखा, लाइक आई सेड द ट्रिक इफ यू रिमेंबर इट, व्हाट डू यू सी? फोरलिम फोरलिम फोरलिम, सबका फोरलिम है. मतलब क्या? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है. भले ही तुम्हारा कैट एक मैमल है, वेल मैमल है और लिजर्ड रेप्टाइल है, बट द कॉमन थिंग दैट यू नोटिस हियर इज दैट दे ऑल हैव द सेम एनाटॉमी, which possibly which means they're homologous organs. Homology is an indicator of ancestry. Very important line from the MCQ, star mark कर दो. Homology is the indicator of common ancestry. Homologous organs मतलब सेम anatomical structure है. अभी ये सबका सेम है, बट उनके functions अलग आ गए. Whale पानी में रहता है, they need to swim. Bat हवा में उड़ता है, he needs to fly. A cat and lizard will need to walk. They are land animals, right? So they need to walk. So in these cases you see the common anatomical structure देखा हमने, पहला चीज. दूसरा common ancestry देखा. एंड तीसरा क्या है? फंक्शन तीनों का अलग है. तीनों के फोरलिम्ब में, बट एक चल रहा है, एक तैर रहा है और एक उड़ रहा है. That's why we see this as an example of homologous organs, which is divergent evolution. A trick to easy trick अगर आपको देखना है तो analogous organs and convergent evolution mean the same thing almost, because analogy is convergent evolution. Convergent evolution में तुमको analogy दिखती है. तो if in case अगर आपको नहीं आया तो elimination करके भी आप homologous कर सकते हैं. Adaptive radiation हमने देख लिया ऑलरेडी. Adaptive radiation तो हो नहीं सकता because ये same geographical region के नहीं आ रहे हैं. They're all from different geographical regions. Since that aerial है, तो land based है, aquatic है, तो ये अलग हो जाता है. So by elimination also I think we'd come to the same answer. Question 10 देखिए तो forelimbs सारे देखो, इसमें क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाता है. फोरलिम्ब बताया गया है सब जगह. फोरलिम्ब मतलब उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है क्योंकि इसका फंक्शन बताया गया है, ये स्विमिंग बताया गया है, इसका बैट्स का फ्लाइंग बताया गया है, ये लोग का वॉकिंग में बताया गया है. फंक्शन अलग हो जाता है. इसमें एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का आपको कुछ नहीं बताया गया, आपको सिर्फ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बताया गया है एंड फंक्शन बताया. टेक अ लुक एट दैट. बेसिकली होमोलोगस ऑर्गन्स है. बस होमोलॉजी मींस, रिमेंबर दिस, दो लाइन याद रखो आप. होमोलॉजी इज डिफरेंट एनाटॉमिकल, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट फंक्शन. एंड एनालॉजी इज से डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बट सिमिलर फंक्शन. तो ये एनालॉजी हो गया.